Hi, this is Manish Gunwani. I'm the CIO Equities at Nippon India Mutual Fund. I've been with Nippon India Mutual Fund for more than 3 years now. Today, we are going to talk about markets in general, mid caps, and some mid cap fund, Nippon Growth. देखिए हमने देखा है कि द मार्केट हैज रिकवर्ड वेरी स्ट्रांगली सिंस अप्रैल मई एंड लॉट ऑफ पीपल आर सरप्राइज्ड एट द वेलोसिटी ऑफ द रिकवरी। ये डेफिनेटली सरप्राइजिंग तो है बट इसका कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। एक तो ग्लोबली स्पेशली इन यूएस यूरोप देयर हैज बीन वेरी हाई स्टिमुलस मॉनेटरी और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का विच हैज हेल्प्ड द रिकवरी। तो आप देखेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी पहले रिकवर हुई और धीरे धीरे इंडिया में भी इकोनॉमी काफी स्ट्रांगली रिकवर हो रही है। सेकेंड इज दैट अपना जो स्लो डाउन था इंडिया में वो 2018 से ही शुरू हो गया था, तो अभी बहुत लेटेंट डिमांड है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंडस्ट्रीज की काफी कम है और अब हम ये देख रहे हैं कि नॉट ओनली सेल्स इज सरप्राइजिंग में, मतलब जो टॉप लाइन है कंपनीज का जो सेल्स है वही नहीं सरप्राइज कर रहा है, मार्जिन भी काफी हेल्दी आ रही हैं। तो अ, ये इसलिए है क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे मैंने कहा कम था, फिक्स्ड कॉस्ट है और सेल्स ग्रोथ के साथ मार्जिन एक्सपेंशन नेचुरल है। And India has also the boon that crude prices are still relatively quite low. Commodity prices are in control. So what we have seen over the last 2 quarters is generally companies have surprised on the sales side and the margin side. So ये कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो ये मार्केट का जो लेवल है, काफी लोग ये बोलते हैं कि इकोनॉमी में इतना स्लो डाउन है तो मार्केट इतना ऊपर क्यों है। तो ये सब फैक्टर्स आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये मार्केट रिकवरी क्यों हुई है। हाँ, अब मिड कैप स्टॉक्स की बात करते हैं। सो मिड कैप सेगमेंट आप देखेंगे तो 2013 टू 17 काफी बुल रन में था, काफी मिड कैप्स मल्टीप्लाई हुए थे वो फेज में। और 2018 से 2020 जून, 2.5 years बहुत एक्सट्रीम बुल मार्केट रहा है, बेरिश बेयर मार्केट, एक्सट्रीम बेयर मार्केट रहा है, जिसमें काफी मिड कैप 60 70 80% गिरे हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि 2018 से ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ, कमोडिटी प्राइसेस में काफी फॉल हुआ, डोमेस्टिक इकोनॉमी में एनबीएफसी क्राइसिस था, ग्लोबली यूएस चाइना ट्रेड वॉर था। तो एक एक्सट्रीम स्लो डाउन हुआ बोथ ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमीज में, जिसकी वजह से काफी मिड कैप्स की अर्निंग्स हिट हुई हैं और इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग कंट्रीज का लिक्विडिटी भी वीक था, डॉलर अप्रिशिएट हुआ तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी गिरता गया। अब हम देख रहे हैं कि मिड कैप में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुआ है और जैसे हम एक साल से बोल रहे हैं कि मिड कैप लार्ज कैप की तुलना में इज मोर अट्रैक्टिव बिकॉज वी हैव सीन अ लॉन्ग करेक्शन। सेकेंडली मिड कैप का जो सेंसिटिविटी होता है, जो लिंकेज है ग्रोथ के साथ, वो काफी हाई होता है लार्ज कैप की तुलना में। तो जब इकोनॉमी रिकवर करती है, ये बहुत हिस्टोरिक साइकिल्स में हम लोग ने देखा है कि पास्ट में कई बार देखा है कि जब इकोनॉमी रिकवर करती है, मार्केट ऊपर जाता है तो मिड कैप्स आउट परफॉर्म करते हैं। तो हमारा व्यू अभी भी ये है कि अल्दो लास्ट 1 साल में मिड कैप आउट परफॉर्म कर चुके हैं, बट आगे 1 2 साल में भी काफी अच्छी संभावना है कि मिड कैप्स विल कीप आउट परफॉर्मिंग लार्ज कैप्स because as I said, the correction in valuation has happened, the time correction has happened for almost 2 3 years, the mid caps have suffered, and therefore going forward we are more positive on mid caps versus large caps. सो मिड कैप्स में अभी काफी डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। एक तो जो सेक्युलर ग्रोथ कंपनीज हैं, जो लीडर्स हैं अपने सेगमेंट में, क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज छोटी हैं बट जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है,
तो वो स्ट्रॉन्ग लीडर का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उसको मिड कैप बना देता है। तो एक तो जो स्ट्रॉन्ग सेक्युलर कंपनीज हैं उनकी भी वैल्यूएशन ठीक ठाक है, जैसे सिलेक्ट प्लेस हैं कंज्यूमर आईटी फार्मा में। दूसरी एक डीप वैल्यू काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी थोड़े सिक्लिकल सेक्टर्स में है। तो क्या हुआ था कि जैसे हमने देखा था 2018-19 में जो स्लो डाउन हुआ और कोरोना के बाद जो मार्च में भी फॉल हुआ मार्केट में और इकोनॉमी में भी जो स्लो डाउन हुआ, उसमें जो cyclical sectors है, sectors like cement, real estate, utilities, industrials, auto ancillaries, ये काफी मिड कैप्स होती हैं ये सब सेगमेंट में। And these over last 2-3 years have fallen 70-80%. Now they've recovered quite a bit, but I would suggest rather than looking at them from the March bottom, if you see the prices from 2018 January, which was the top of the mid cap bull run, अभी भी प्राइसेस काफी नीचे हैं। इनका बुक वैल्यू बढ़ा है, कैपेसिटी बड़ी है, अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा है। अभी अर्निंग पोटेंशियल से एक्चुअल अर्निंग्स आने की काफी अच्छी संभावना है। So going forward for next 1-2 years, we feel that as the earning growth of mid caps comes through across these cyclical segments like real estate, cement, utilities, auto ancillaries, we will see a lot of stocks do very well. सो ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, तो काफी अच्छा चॉइस है मिड कैप स्टॉक्स में। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड इज अ मिड कैप ओरिएंटेड फंड। जनरली इसके मार्केट कैप का आप स्प्लिट देखेंगे, सो वी टिपिकली हैव अबाउट 65-70% मिड कैप स्टॉक्स, 10-15% each of large cap stocks and small cap stocks. We try to run the fund in a manner such that we don't take very very extreme sector bets. So बहुत aggressive भी नहीं चलाते हैं, बहुत defensive भी नहीं चलाते हैं. Idea is to keep a balanced portfolio. So if you see last 2-3 years, we have generally beaten the benchmark consistently, and we've done reasonably well against the peers. Um, if you see, the fund did suffer a bit in the March and April meltdown, because हमारे पास काफी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स थे जो आउटडोर लिंक कंजम्पशन से लिंक थे, कि जैसे मल्टीप्लेक्सेस हुई, होटल्स, रिटेलिंग एक्सेट्रा। नाउ क्लियरली कोरोना ऐसी चीज है जो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे। तो जब कोरोना हुआ मार्च अप्रैल में, तो ये स्टॉक्स पे काफी हेवी असर पड़ा, and therefore the fund did suffer in March and April. But the good part is, if you see over last 6 months, the fund has recovered quite well. A lot of these stocks have come back. We were able to pick up some good stocks, both structural and cyclical in the meltdown. And we have been quite, to my mind, nimble about changing the sector allocation. तो जैसे आप देखेंगे कि हेल्थ केयर में जून में काफ़ी बड़ा वेटेज था, अभी उसकी वेटेज काफ़ी कम कर दी है, बिकॉज लॉट ऑफ स्टॉक्स इन हेल्थ केयर डिड वेल, so we booked profits on those. And today we have more cyclical sectors like financials being much bigger in terms of weight. So hopefully we will continue to deliver consistent performance, good returns with a strong focus on risk management. See, as far as mid caps are today, हमारा feeling ये है कि जैसे मैं हमने कहा कि mid caps are likely to outperform large caps. So it is fit for everyone, but in general ये सही है कि mid caps tend to be a bit more volatile. So definitely from a long term perspective, इसका risk थोड़ा ज़्यादा होता है versus the large cap category. But it is a good tactical and cyclical opportunity अभी,
कि नेक्स्ट 1-2 years आई थिंक मिड कैप्स विल डू बेटर. सो हमको ये लगता है कि all investors should move a bit of their allocation from large and multi-cap funds to mid and small cap funds. एंड जो पर्सपेक्टिव है वो एटलीस्ट 1 से 3 साल का होना चाहिए, क्योंकि मिड कैप्स टेंड टू बी वोलेटाइल, तो यू नीड टू हैव a bit of a medium term perspective for mid caps. In terms of percentage allocation, ये काफी risk profile पे dependent होता है. Obviously, जिसका रिस्क ज्यादा है they should have more mid caps. जिसका एज ज्यादा है या रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है, उसके उनके लिए obviously mid caps needs to be a bit lesser in the overall asset allocation. बट जिसका भी एसेट एलोकेशन बेस है, समझिए कि लॉन्ग टर्म मिड कैप एलोकेशन किसका 40% है, तो अभी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए वर्सेस लार्ज कैप. एंड एज द इकोनॉमी रिकवर्स, एज द वैल्यूएशन कैच अप, दे शुड ट्रिम डाउन आफ्टर दैट. बट एट दिस पॉइंट मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट कॉल ये है कि टैक्टिकली from a 1 to 3 year perspective, people should shift a bit from large cap slash multi cap to the mid cap and small cap category. See, given mid caps are volatile, a very good way to invest is through the staggered or SIP methodology. इसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा मार्केट टाइम नहीं कर रहे हैं, और हमने देखा है कि सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जैसे मिड कैप बहुत गिर गए तो उसके बाद लोग जब पैसे रिडीम करते हैं तो effectively they have got the loss without getting the gain. And being slightly volatile, unless you stay the course and do it in a disciplined manner, जो regularly invest कर रहा है, आप देखेंगे कि 15-20 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी फंड्स ने 18-20% जैसे कंपाउंडिंग दी है. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गलत टाइम पे पैसा ना निकालें. तो एस आई पी बहुत अच्छा तरीका है कि इट विल कीप यू डिसिप्लिन, इट विल कीप यू अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ द मार्केट कि एक महीने में ये हुआ, 1 महीने में वो हुआ. तो दैट इज अ वेरी हेल्दी वे ऑफ बिल्डिंग अप एलोकेशन इन मिड कैप फंड. सो समरी में मैं ये कहूँगा कि इंडियन इकोनॉमी 3-4 साल के स्लो डाउन के बाद अभी वेल पॉइज्ड है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स लो हैं, ग्लोबली थिंग्स आर पिकिंग अप, बेस ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी लो, रॉ मटेरियल प्राइसेस आर इन कंट्रोल. तो अगर 1-2-3 साल का अच्छा साइकिल आता है इंडियन इकोनॉमी में, जो काफ़ी लाइकली है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है निवेशक के लिए कि मिड कैप्स का एलोकेशन बढ़ाएं, और मिड कैप का वैल्यूएशन स्पेसिफिकली इन cyclical sectors is very very cheap, and we think that good returns can accrue. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.